Hello, my dear students. How are you all? I hope you will find and I welcome you to the science class for class 8. And today we are going to start a new chapter, that is chapter 3, synthetic fiber and plastics. So without wasting time, let's get started. So what things we are going to study in this lesson? We are going to study about synthetic fiber, then types of synthetic fiber like rayon, nylon, polyester, acrylic fiber, corrosil. Okay, and in last we are going to study about advantage and disadvantage about synthetic fiber. Okay, so these things we are going to learn in today's class, and this thing we will learn in the next class. Okay, what are these the characteristic of synthetic fiber or plastic, then raw material for synthetic fibers, plastic, kinds of synthetic plastic. Okay, yes, then a common plastic and their uses, then plastic and environment, then damage caused by plastic. Okay, and then measures to control the effect of plastic. Okay, yes. So in a previous class you have learned that the cloths are made from the fabrics, and these fabrics are made from fiber, and these fiber can be natural or artificial. Okay, so the cloth we wear is made from fiber. Okay, the cloth we wear, those are made from fabric, and the fabric are made from fiber, and these fibers are can be natural and artificial. And then again in natural it can be from a plant and it can be from animal. Yes, so from plant the fiber are like cotton, then jute, and in animals it is like wool and silk. Okay, yes. Okay, so but increase in the demand, due to the increase in demand due to increase in population, there was a huge increase in demand of this natural fiber. Okay, but this there was no availability of that much amount, so that to fulfill the demand. Okay, so what happened, the scientists develop artificial fiber. Okay, yes, using some natural or non-natural products. Okay, using some natural plus non-natural substances, and they develop the artificial fiber. Okay, yes. So what kind of a material they use? They use mostly the petroleum product, that is called petrochemicals. Okay, and the coal. Okay, as a raw material. Okay, yes. Then artificial okay, so those fibers. Okay, the scientists which develop the fiber, those are called synthetic fiber. Okay, as they are made from, they are man made. Okay, or they are artificial, and that is why they are called synthetic fiber. Okay, yes. So what is actually synthetic fiber, how they are formed? Okay, so a synthetic fiber is a chain of small unit joined together. Okay, a synthetic fiber is a chain of small units joined together. Okay, so what happened? Suppose this is a fiber, one single fiber. So it is not just one single. Okay, it is divided into many small parts. Okay, and so okay, yes. So then synthetic fiber is a chain of small fiber. Okay, chain of small fiber. Okay, small unit. Okay, joined together to form a fiber. Okay, just like you see this necklace, the small this pearls are joined together with the help of thread, and they make a chain. Okay, similarly if you see the example of this, the paper clips are joined together. Okay, to form a chain. Similarly, the single unit of this fiber joined together to form a long fiber. Okay, and this long fiber is called polymer, and the single unit is called monomer. Okay, for understanding, you can take the example of just like a wall. Okay, a wall is made up of bricks, isn't it? जो दीवार होती है वो ब्रिक्स से मिलके बनी होती है। जो हमारी बॉडी होती है ये सेल से बनी होती है, सेल छोटे छोटे सेल से मिलके हमारी स्किन बनी होती है, और एवरी ऑर्गन
छोटे छोटे सेल से मिलके बनी होती है। ओके, वैसे ही ये जो सिंथेटिक फाइबर है ये सिंगल स्मॉल यूनिट से मिल के बने होते हैं और वो स्मॉल यूनिट को बोलते हैं मोनोमर। ओके, वो फाइबर का भी ऐसा नहीं है कि ये जो सिंगल यूनिट है सबके लिए सेम होगा, नहीं। अब एक नायलॉन का जो फाइबर होगा उसका जो सिंगल यूनिट है वो अलग होगा, जो एक्रिलिक है उसका जो सिंगल यूनिट है वो अलग होगा, ठीक है। लेकिन जो मोनोमर है वो जो उसका सिंगल यूनिट है तो सिमिलर यूनिट मिलके वो एक पूरा नायलॉन बनाएंगे। ओके, और जो एक्रिलिक का फाइबर है उसमें जो सिंगल यूनिट है वो सब सेम है, और तो सेम तरह के सिंगल यूनिट मिलके एक पॉलीमर बनाते हैं। ओके, सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं। ओके, यस। So each small unit is actually a chemical substance. Okay, so each small unit, okay, अगर आप इसको फाइबर लेते हैं तो एक जो छोटा छोटा यूनिट है वो एक केमिकल सब्सटेंस से बना होता है। ओके, और ऐसा नहीं है कि ये सिंथेटिक फाइबर में ही होता है बस, जो नेचुरली अकरिंग जो कॉटन होता है उसको भी ये जो पूरा होता है इसको बोलते हैं सेलुलोज। और इसको अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो आप देखेंगे ये डिवाइड है छोटी छोटी चीज़ों में, और उसको बोलते हैं ग्लूकोज। ओके, अब ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको ऐसे अपने आई से नहीं दिखेगा, इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर आपकी जो दीवार है वो भी जो ईंट से बनी है, अगर आप कुछ दूर से देखेंगे तो आपको ये ईंट नहीं नज़र आएगी, आपको बस एक दीवार नज़र आएगा। ओके, वैसे जैसे कि अगर हम अपने बॉडी में ऐसे देखेंगे तो हमारे सेल्स नहीं देख पाएंगे इजीली, लेकिन अगर इसको माइक्रोस्कोप के अंडर देखेंगे तो हम लोग सेल्स को देख पाएंगे। ओके, यस, समथिंग यू कैन रिलेट इट, ओके, टू अंडरस्टैंड। Then types of synthetic fiber. So we have 4 or 5 these types, like rayon or artificial silk. Then second is nylon. Then third is polyester. Then fourth is acrylic fiber, and the fifth one is Corosil. Okay, yes. So we will start with the rayon. Okay, and that is a artificial silk. So in a previous class we have learned about something about silk, that silk was discovered in China. Okay, and China was able to keep it secret, okay, for a long time. Okay, so that he can get the benefit. Okay, not other countries. Okay, yes. And why it is so? Why the silk has more demand? Because its property, its quality as such that its demand is high. Okay, उसकी कुछ ऐसी खूबी है, उसकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से उसका डिमांड बहुत ज़्यादा होता है। what are like that characteristic, like the shimmering appearance, the shining of a silk, okay, the light weight means it is less weight, okay, मतलब हल्का होता है वो कितना मतलब भारी नहीं होता है। फिर then you have that it give you coolness in summer season, then it give you a warm in your winter season. Okay, then yes, it is okay, yes. So all these things. So but this silk was not able to meet the demand, so scientists develop an artificial fiber. It was very similar to silk, that is why it is called artificial silk. ये जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक ऐसे फाइबर की खोज की जो कि जिसका प्रॉपर्टी कुछ सिल्क के ही तरह था। ओके, यस, सो दैट इज वाई रेयन इज ऑल्सो कॉल्ड द अल्टरनेट टू सिल्क और आर्टिफिशियल सिल्क। ओके, so how the scientists made this rayon? They use the pure cotton or the wood cellulose or pulp. Okay, what do you mean by wood cellulose? जो लकड़ियाँ होती हैं उसको अगर छोटे छोटे काट के, जैसे आपने स्कूल में कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो कार्डबोर्ड है या जो पेपर्स है उसको अगर पानी के अंदर सोख करके रख देंगे तो वो कुछ दिन बाद उसका पेस्ट बन जाता है, काफ़ी पेस्ट जैसा हो जाता है, ये इतना हार्ड नहीं रह जाता। ठीक है, वैसे ही जो लकड़ियाँ होती, जो वुड होता है, उसको अगर हम लोग कंटेनर में रखें और कुछ केमिकल्स इसमें अंदर डाल दें, कुछ एसिड्स केमिकल डाल दें, तो ये धीरे धीरे काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है और फिर इसको अगर हम ग्राइंड कर देंगे तो इसका एक पेस्ट बन जाएगा ऐसा। ठीक है, हाँ, और फिर इसको हम लोग यूज करके ये फाइबर बना सकते हैं।
और इसका जैसे कि ऐसे ही इसका यूज करके पेपर भी, राइटिंग के लिए जो पेपर यूज होता है वो भी पेपर बनता है, ठीक है। तो ऐसे ही पल्प का यूज करके फाइबर भी बनते हैं, ठीक है। यस, अब इसके क्या क्या यूजेस हैं। सो इसके यूजेस हैं जस्ट लाइक साड़ी, देन ड्रेसेस, देन सॉक्स, ओके। यस, then when we mix this rayon with the cotton, we can get the bed sheet, then curtain या blankets, okay। so blanket, curtain और bedsheets जैसे चीज़ों को बनाने के लिए रेयन को कॉटन के साथ मिक्स करते हैं तो एक अच्छी क्वालिटी का हमको ये चीज़ें मिलती हैं, ओके। वैसे ही जब भी रेयन को वूल के साथ, नेचुरल वूल के साथ मिक्स करते हैं तो इसको हम लोग अच्छी कारपेट बना सकते हैं, ओके। दिस देन बैंड जो मेडिकल में यूज होता है जैसे बैंडेजेस, देन सर्जिकल ड्रेस जो डॉक्टर्स ऑपरेशन के ड्यूरिंग जो ड्रेस पहनते हैं, ओके। सो वो जो ड्रेस होता है वो रेयन का बना होता है, ठीक है। यस, देन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर, यस, इन मैन्युफैक्चरिंग टायर दे आर ऑल्सो यूज्ड, okay, yes. So here you can see some products. This is the fabric of this rayon, okay. This is the rayon, fabric of rayon. Then this is the carpet, then this is the bandage which is used in hospitals, and this is the blanket, okay. Yes, and this was the first artificial synthetic fiber, but wholly we cannot say that it is a pure artificial fiber because we have used natural things, okay. Yes, in a next case in nylon, the scientists used they do not use any natural, they used all the things the non natural, okay. Like they used पेट्रोकेमिकल्स प्रोडक्ट लाइक अमाइड मॉलिक्यूल, ओके। अमाइड मॉलिक्यूल एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि पेट्रोकेमिकल्स, जब हम लोग पेट्रोल निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं ग्राउंड से, तो उसको जब प्रोसेस करते हैं, रिफाइन करते हैं, तो उसके अंदर से एक ये सब्सटेंस मिलता है, ओके। दैट इज़ इट्स नेम इज़ अमाइड मॉलिक्यूल। सो इसका यूज होता है नायलॉन बनाने में, ओके, और बहुत सारे फाइबर बनाने के लिए, ठीक है। yes, so how nylon is prepared? It is prepared from petroleum, okay, that is amide molecule plus coal plus water plus air, okay. yes, इट इज़ अ फुली सिंथेटिक फाइबर, क्योंकि जो पिछला था उसमें हम लोगों ने नेचुरल सब्सटेंस यूज किए थे, तो वो उस तरह से हम लोग उसको प्योर आर्टिफिशियल नहीं बोल सकते, लेकिन इसको है जो फुली प्योर सिंथेटिक फाइबर, प्योर आर्टिफिशियल फाइबर बोल सकते हैं, ओके। यस, देन इसकी क्या खूबी थी नायलॉन की, इसमें इलास्टिसिटी होती है, मतलब कि इसको अगर हम लोग स्ट्रेच करेंगे तो ये बढ़ जाता है, ओके। देन ये स्ट्रॉन्ग होता है, लाइट होता है, मतलब कि इसका जो वेट होता है वो काफ़ी कम होता है, ज़्यादा भारी नहीं होता है, लश्चरस होता है, मतलब कि इसमें से शाइनिंग आती है, ओके। यस, जैसे कि इसमें जैसे कि इसमें शाइनिंग है, इसमें जैसे शाइनिंग है वैसे ही, ओके। देन ये जो नायलॉन होता है इजी टू वॉश होता है और वाटर रेजिस्टेंस होता है, ज़्यादा ये वाटर सोक नहीं करता, वाटर ऑब्जर्व नहीं करता है, ओके। यस, ओके। सो ये कहाँ पे यूजेस होता है, तो इसका यूजेस जो होता है वो सॉक्स में यूज होता है, ओके। देन रोप्स बनाने में, देन टेंट्स बनाने में, टूथब्रश, देन कार सीट बेल्ट, ओके, देन स्लीपिंग बैग, कर्टन्स, ओके। इट इज़ ऑल्सो फॉर यूज फॉर climbing rope, okay, and then parachutes, okay. And it is said that its fiber are stronger than steel wire, okay. So you can imagine the strength of the nylon fiber, okay. Yes, so here are some product like footwear, then net, then fishing line net, okay, then this tent, then thread, okay, then sleeping bag, ropes, seat belt, okay, then hose, the pipes, okay, all these things. The next is polyester. So polyester is of two type, one is terylene and one is PET, that is polyethylene terephthalate, okay. Here it is given polyethylene terephthalate, okay. Yes, PET, okay. Yes, so what is terylene? So terylene is made by the process of using process of polymerizing, means making, okay, process of mixing, okay, you can say mixing, okay. Yes, or blending.
mixing ethylene glycol and terephthalic acid. सो इतना इसको रट्टा करने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन जस्ट you can have this general sense. Okay, yes. So these two things, ethylene glycol and terephthalic acid, these two things are used to make a terylene. Okay, then it is also mixed with natural fiber like cotton and wool to make a good quality of fiber. Okay, yes. Then in PET, that is polyethylene. Okay, polyethylene terephthalate is made by using monoethylene glycol. Okay, monoethylene glycol. Okay, here was ethylene glycol, but here is monoethylene glycol and purified terephthalic acid. Okay, terephthalic acid, here also it was terephthalic acid and here is also terephthalic acid. Okay, here is purified terephthalic acid. Okay, so you can have just general sense. Okay, yes. Then uses of clothing, so uses of terylene, where these terylene are used. So they are used in clothing fabrics. Okay, so the fabrics are made from terylene and this fabric is used for making ladies suit, then gents pants. Okay, yes. Then cloth, this is sold as polycot and terrycot and polywool. How what do you mean a polycot? When this polyester, okay, polyester is mixed with cotton, so it is called polycot. Okay, when it is the terylene is mixed with cotton, so it is called terrycot. Okay, you may have heard the terrycot. So when terylene is mixed with cotton, it is called terrycot, and when polyester is mixed with wool, so it is called polywool. Okay, yes. Then where this terylene used, it is used for sails, for sailing boats. Okay, so you can see here sailing boat. So this is the sail, okay, which is made from the terylene. Okay, then hoses and conveyor belts. So this is hoses, actually the pipe which is used in agriculture, and this is the belt machines. Okay, belt which is used to run the machines in factories. Okay, yes. Then the uses of PET. Okay, so its uses are synthetic cloth. Okay, it is used to make synthetic cloth. Then it is used for making container, box like container. Okay, lunch box like container. Okay, to for packaging. Then soft drink bottles, then magnetic tapes. So you can see here soft drink bottles and some container are also made. Then this magnetic tape which is used in electronic medium to record sound recording. Okay, so these tapes are made from the PET. Okay, yes. Then next is acrylic fiber. So acrylic fiber are made from the acrylonitrile. Okay, acrylonitrile. Okay, by polymerization, means by processing of acrylonitrile. Okay, yes. So its feature, its quality are like that. It's light, means it has a low weight, and it is soft. Okay, and also it is resistant to weathering, means after 1 or 2 year its color do not fade. इसका कलर जो होता है ख़राब नहीं होता, वो वैसे का वैसे रहता है. ठीक है, yes. So mostly if you have seen this wool, okay, which your mom or the ladies used to knit the sweater and muffler. So these wool are made from the acrylic fiber. Okay, yes. And they are actually the you can say artificial wool. Okay, so they are very similar to wool, but they are artificial. Okay, yes. Then yarn for knitting, so they are used for making yarn for knitting sweater. They are used for making blanket and shawl. Okay, they are light and warm as woolen. Okay, so just like woolen, they are light, they are हल्के होते हैं. Okay, their weight is less and they are warm. Okay, and they are cheap as compared to wool. Okay, yes. Then last one is Corosil. So Corosil, it is a trade name of vinyl chloride. There is a substance whose name is vinyl chloride. Okay, so when this vinyl chloride is used to make a high quality fiber, high quality polymer, so this thing
विनाइल क्लोराइड से जो यूज करके जो पॉलीमर बना रहे हैं, पॉलीमर का क्या हुआ, बड़ा सा चेन जो बना रहे हैं उसको बोलते हैं कोरोसिल, कोरोसिल। ओके ओके, सो ये कोरोसिल एक्चुअली जो होता है ये वाटर एंड एयर रेजिस्टेंस होता है, वाटर एंड एयर प्रूफ होता है, और इसके लिए जहाँ पे भी वाटर रेजिस्टेंस का काम होता है ऐसे क्लॉथ का, वो उसके लिए इसका यूज होता है, जैसे कि रेन कोट हो गया, ओके, जैसे कि बाथरूम में कर्टन हो गया, ठीक है, यस। Okay, so here advantage and disadvantage of synthetic fiber. Okay, so advantage of synthetic fiber is they do not shrink. Okay, अभी आप जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो कई बार श्रिंक हो जाते हैं आफ्टर वॉशिंग, यू सी देर आर मेनी crease okay found there on your shirt, okay, but if it is made of synthetic fibers you will not find any folding, okay, in your shirt, on your cloth, okay, yes. So they do not shrink, okay, then do not wrinkle, and they have high luster, means they have shining, and don't become yellow with age, means after some year, after using it 2-3 year their color do not fade, okay, so color वैसे का वैसे ही रहता है. They need very little or no iron, okay, as they do not wrinkle, okay, yes. Then they are easy to clean and dry, okay, yes, and they are long lasting and less expensive. So these are very important features, they are very important advantage of synthetic fiber, okay. But as we know that everything has some good and negative points, so yes, synthetic fiber also have some negative or disadvantage, like they are easily, they can be easily melt and burn. So what happen, so that is why it is dangerous if ladies wear the synthetic fiber and they work in kitchen, because if it will catch fire easily, okay, yes. They do not absorb water, okay, or sweat, so that is why they create uncomfortableness in during rainy season and during winter, okay, yes. ओके अभी जो कॉटन का जो नेचुरल फाइबर से जो बने होते हैं कपड़े, वो क्या होते हैं, अगर आपने नेचुरल कॉटन के कपड़े पहने हुए हैं तो ये जो कॉटन के कपड़े होते हैं, जो आपका स्वेट है ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर आपके बॉडी को कूलनेस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं ये एब्जॉर्ब नहीं करते हैं और फिर वो कूलनेस इफेक्ट नहीं हो पाता है, ठीक है। Then skin problem in few cases due to electric charge. So you might have seen that when you remove your cloth during winter season, so you especially the sweater, so you will get some chut chut voice noise, okay. So that is because of the electric charge, just like if you rub a pen with your hair, so this pen got some electric charge. So similarly this synthetic fiber, when you move, when you go to school, when you play, so this synthetic fiber they rub with your friend's cloth, okay, and or some wall, okay, so they get some electric charge, okay, and when you remove it so they spark, okay, उसमें से कुछ आवाज़ आती है और कुछ ये कुछ आवाज़ें आती है, तो इससे कुछ ज़्यादा डेंजरस प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ लोगों में इससे स्किन रैसेस या स्किन में इचिंग ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, okay. And then last one is this synthetic fiber are non biodegradable, okay, yes, so it causes a problem for environment, okay, yes. So that was the thing, okay. One thing was the nylon. The nylon is made by the the scientists from two cities, okay, nylon, okay, nylon. So they are made, it is made by two scientists from two countries. The one is New York and one is London, that is why its name is got nylon, okay. NY refers to New York and LON refers to London, okay, yes. So if you have any doubt please ask. Thank you so much. For you have some question, try to attempt it, like what are synthetic fiber, okay, then what are the types of synthetic fiber, then what is polyester and its type, then what are the advantage of synthetic fiber, then what are disadvantage, and what you learned in today's class. Yes, please let me know. Thank you so much. Stay fit, stay healthy and keep studying. Bye bye, take care.